Hello everyone, welcome to CAP 101 that is Current Affairs Point 101. So आप सभी को Current Affairs Point 101 में स्वागत करती हूँ. So today we will be discussing a bit small article from The Hindu. तो The Hindu का एक छोटा सा article है which I think was important. So that's why I'm here to discuss the article from The Hindu. So the discussion will be regarding national monetization pipeline. तो आज जो डिस्कस हम करने वाले हैं वो होगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या फिर जिसे हम छोटे नाम में कह सकते हैं एसेट मोनेटाइजेशन. तो अभी लास्ट वीक ही एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा एडिटोरियल जो है पब्लिश किया गया था द हिंदू के द्वारा. द आर्टिकल वाज रियली अ बैलेंस्ड विच इज़ टेलिंग अबाउट द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. इट वाज रियली very good. So yes, let's get started with the article for the day, that is national monetization pipeline and the infrastructure deficit, जिसको कि मैंने ग्रीन कलर के मार्कर से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है. राइट, सो लेट्स बिगिन. Basically, at first, we need to understand what is the basic idea. That means what is asset monetization. Basically, asset monetization यहाँ पर मैंने मार्क भी किया हुआ है, but I will explain it by my own words. राइट, सो एसेट मोनेटाइजेशन एक ऐसा तरीका है जो गवर्नमेंट अपनाएगी. गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर एसेट या फिर उसका जो भी प्लेस, और वी कैन से रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, then you can say open space or land, all those stuffs will be given to lease. मतलब लीज में वो एक प्राइवेट कंपनी को देंगे for a certain period of time, for example 10 to 15 years or 20 years or whatsoever. सो एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के लिए वो एक प्राइवेट कंपनी को देगी फॉर द मेंटेनेंस, और यू कैन से फॉर टेकिंग आउट प्रॉफिट. एंड in place the company will have to pay to get that authorization for 15 20 whatever years. The company have to pay a certain amount. That means एक lease system होगा. For example, अगर हम देखें एक हाईवे, वेल एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दैट मोस्ट फ्रेंडली, मतलब मोस्ट ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे अभी कौन सा बना है. हिंट देती हूँ, चंडीगढ़ से लेकर के आपको बताना है दिल्ली तक जाता है ये हाईवे का एग्जैक्ट नंबर आपको बताना है, NH कितना. राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज एसेट मोनेटाइजेशन. तो सपोज कि वो एक हाईवे है जो कि फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इज़ द अथॉरिटी फॉर दैट. अगर एसेट मोनेटाइजेशन होगा या फिर अगर एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा तो उस दौरान उस हाईवे का जो आप कह सकते हैं मालिकाना या फिर ऑथराइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंटेनेंस के लिए. देन उसमें से टोल का जो टोल फी कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, ऑल दो स्टफ्स विल बी डन बाय द कंपनी, एंड द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू गेट दैट प्रॉफिट. लाइक वो कंपनी जैसे भी चाहे उसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकती है. राइट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट. एंड फॉर दैट टाइम पीरियड, अगर 20 ईयर्स के लिए वो कंपनी ले रही है अपने अंडर उस पर्टिकुलर स्पेस या फिर पर्टिकुलर हाईवे को, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा. सो दैट इज़ वॉट द प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट इज़. वो जो अमाउंट गवर्नमेंट को मिलेगा वही होगा गवर्नमेंट का आप कह सकते हो प्रॉफिट. तो इस तरीके से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि बाय यूजिंग दिस टेक्निक और बाय यूजिंग दिस वे द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक 6 ट्रिलियन रुपीज़, इंडियन रुपीज़, INR. ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन इंडिकेटिव वैल्यू ऑफ ₹6 लाख करोड़ एक्यूरिंग ओवर 4 ईयर्स. तो 4 साल के टेन्योर में इस प्रोसीजर को अप्लाई करके इंडियन गवर्नमेंट could earn around 6 trillion rupees or 6 lakh crore, whatever you feel comfortable. The amount is same. So this is the thing which the Indian government is targeting to achieve. तो बेसिकली इसको कनेक्ट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से. नाउ सी हाउ. सो
गवर्नमेंट का ये कहना है, या फिर मोस्ट ऑफ द एक्सपर्टीज दे आर ऑल्सो सेइंग दैट गवर्नमेंट के पास फंड कलेक्शन उतनी नहीं हो रही है, और वी कैन से आफ्टर दिस पेंडेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए उतना फंड गवर्नमेंट के पास फिलहाल नहीं है. सो टू रेज fund regarding the infrastructure development and overall upliftment, and to increase the GDP and other economic stuffs. So government have chosen a path, or you can say it's a new path government is going to take, so that it can build up revenue, it can increase its revenue collection. And वो जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो रेवेन्यू को गवर्नमेंट यूज़ करेगी दूसरी जगह पे, सो दैट they could maximize the infrastructure development. So that is the positive area behind this concept. Well, we know guys that in every concept there is pros as well as cons, right? एडवांटेज सिर्फ किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी मॉडल पे एग्जिस्ट नहीं करता, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हर एक चीज़ के. तो उसी तरीके से ये जो मॉडल है हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस देखे गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अनुमान किया जा सकता है कि अगर ये डिसएडवांटेजेस हावी हो गए, देन दिस कुड लीड टू अ ग्रेटर लॉस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर थिंग, और यू कैन से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवे एज इट इज़ वेरी फेमस, राइट? अगर इंडियन रेलवे को आप कह सकते हो कि लीज पे दे दिया गया टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वी कैन से टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. So there is a chance that the normal people may get, may have to face certain problems. That means there is an idea that the private company which will be owning it for a certain period of time may increase the fare. And we all know that Indian Railway is the lifeline of our nation. Every single common man, we know that almost 70% of our Indian population belongs to a middle class society. They have an average income, so they very much like they are more interested towards the local things, or you can say a stuff, or or certain things which is having a medium range. For example, Indian Railway, right? सो इंडियन रेलवे का यूज़ हर लोकल इंसान भारत में करता है. तो अगर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कोई एक पर्टिकुलर कंपनी उसको हायर कर लेगी, या फिर सॉरी उसको लीज पे ले लेगी, तो देर इज़ अ चांस कि वो कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए टिकट का फेयर एंड अदर स्टफ्स को बढ़ा देगी. ये आइडिया जो है रखा गया है. वहीं पे ऑन द अदर हैंड साइड एक और एग्जांपल हमारे जो द हिंदू के आर्टिकल में है वो दिया गया है रिगार्डिंग द एयर एशिया. तो एयर एशिया के बारे में एक एग्जांपल साइट किया गया है. हियर इट इज़. सो इस एग्जांपल में कहा गया है कि इन कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू एयर एशिया जो है दैट्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, वेयर एज other certain for example like other certain airlines which like Indigo and other stuffs, they have comparatively less fare but they are run out by the private companies. तो ये example भी रखा गया है that yes, that may not happen. So actually the thing is this is a new thing, and every new thing needs both side to be seen and then finding a better conclusion. So what is more important is we have to find a beach ka rasta, or we can say a balanced path, so that advantage like we could enjoy the advantages and stop out the disadvantages, so that कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमारे एडवांटेजेस के ऊपर हावी ना हो. दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. सो हियर अ सजेशन कुड बी सीन. यहाँ पे एक सजेशन है सी यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है दैट suppose this is the suggestion here. Suppose Indian Railway, which is the lifeline and most of the peoples are associated, तो उस चीज़ को privatize ना करके, so that monopoly does not occurs, certain things which are less used by the government, for example a barren land or a warehouse which hasn't been used for a long period of time,
all those stuffs could be used for asset monetization, so that the public are not, or we can say the common man are least affected. So this is a small idea which has been given in this paragraph. So overall, let me know what's your opinion regarding this asset monetization, and what do you feel about this, and what step do you suggest that this should happen. And yes, one thing is very pretty sure, that money is required for the development, right? So this is a new step which has been taken by the government. So yes, pros and cons are always present in any of the step whatever you take, but what we have to keep in mind, that pros should get an upliftment, and the cons should not get more upliftment, and it should be suppressed. Like, we have to keep that suppressed, and we have to leave the lift up the pros. Okay, so yes, that is the this is the article regarding the national monetization pipeline, or we can say the asset monetization. So ये जो है बातें चल रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, and they are trying to reach and to implement this scheme. So let's see that what happens, and what all stops, or what all development under this scheme could be seen. So for now, let's stop the discussion over here. I think I could explain certain things. At least the concept is clear to you, that what is national monetization pipeline. So stay tuned. Bye bye. Jai Hind.